to Nirmal Bang, ladies and gentlemen. I'm Hira Dadia. We have with us Kunal Shah, Head of Commodities Research, joining in. Kunal, welcome to the show. Kunal, my first question coming to you is, the last time we spoke as well in terms of Wednesday, there have been some clear direction in how we are expecting the commodity market to perform. From here on, what is your recommendation? Because we were expecting base metal prices to inch lower. The advice was to sell crude on rise as well. Yes. So Kunal, now that we had a clear strategy coming in with regards to on Wednesday, what's the view that you have in terms of gold and silver? Because we are not expecting a major downside. However, a short-term correction is something that was on the cards. Yeah, so first of all, I was not expecting the way gold prices fell yesterday. It was something, that I was studied, and two to three things one should watch out for. One, the inflation which is there in the world. So I was studying the inflation of US, Europe, everyone. The inflation is going to be very sticky, and it is not going to go down that easily. Number one. So that remains one of the main reason why gold and silver prices have gone down so sharply. It means that the central banks will continue to be very hawkish going forward, and hence, so interest rate in US this month is expected to rise by almost 100 basis points. That will take US interest rate to 4%, and next month by another 50 basis points, so 4.5%. So all the investors who have invested in gold ETFs in US and in Europe, for these people, keeping money in the banks is going to fetch them 4.5%, and keeping money in gold is going to give them 8 to 9% on an average, and that is not guaranteed. So that's why more and more people are buying dollars and going out of gold right now. So this is a momentary phase. This is not permanent phase, but right now it doesn't seem that this is getting over. Number one. So I'll just translate in Hindi. So हमने देखा डॉलर इंडेक्स को आज ऑलमोस्ट 110 का लेवल टेस्ट किया है, और गोल्ड और सिल्वर मैं इतना नीचे आएगा इतना एक्सपेक्ट नहीं करता था इमीडिएट बेसिस पे. मुझे लग रहा था एक बार ऑन द डाउन साइड 1680 तक आएगा, पर ये तो वो भी ब्रीच करके और नीचे जा रहा है. सो मेरा मानना ऐसा है, ये इसके लिए नीचे जा रहा है. उसका रीजन ये है कि ये जो इन्फ्लेशन है ये और भी बहुत टाइम तक सिस्टम में रहने वाला है, और अगर इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा टाइम तक सिस्टम में रहता है तो गोल्ड और सिल्वर, अगर आप यूएस में रहते हो तो आपको 4.5% इंटरेस्ट रेट हो जाएगा नेक्स्ट मंथ. ये मंथ हो जाएगा 4%. सो इन्वेस्टर ने गोल्ड ईटीएफ में से पैसा निकाला और सब बैंक पे डाल रहे हैं, बिकॉज दे आर गेटिंग हायर रिटर्न्स इन बैंक, और दैट इज गारंटेड. तो गोल्ड में गारंटी नहीं है कि 4% रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा इमीडिएट बेसिस पे. सो मोर एंड मोर अमाउंट ऑफ मनी हैज flown from gold to the fixed asset instrument. So near term में, immediate term में जब तक डॉलर स्ट्रॉन्ग रहता है तब तक गोल्ड शायद बढ़ ना पाए और भी नीचे जा पाए थोड़ा. सो अभी लेवल आ रहा है 1650 का. सो 1650 इज अ साइकोलॉजिकल हर्डर. यहाँ भी एक बार टेस्ट करेगा तो आई विल नॉट बी सरप्राइज. सो लंबी अवधि के लिए मैं अभी, मुझे ग्रुप में बहुत सारे जन क्वेश्चन पूछ रहे हैं. लंबी अवधि में 52,000 टाइम है. ये 2023 के आसपास आएगा. $2200 कॉमेक्स को आने के लिए और ज्यादा टाइम है राजेंद्र जी. ये आई थिंक इट विल कम नॉट नेक्स्ट ईयर ऑल्सो. सो सिल्वर गोल्ड बोथ लॉन्ग टर्म फंडामेंटल में कोई चेंज नहीं है. शॉर्ट टर्म में जब तक ये इंटरेस्ट रेट एग्रेसिवली बढ़ता रहेगा या इसकी एक्सपेक्टेशन बढ़ती रहेगी तब तक गोल्ड और सिल्वर में कोई बड़ी अपसाइड आ नहीं पाएगी. सो नियर टर्म में शायद ना बढ़ पाए और घटे. सिल्वर 55,000, गोल्ड 48,800 का लेवल एक बार टेस्ट कर सकता है. बट जैसे मैंने कहा, लंबी अवधि के हिसाब से मंदी नहीं लग रही है. शॉर्ट टर्म में ये मंदी कंटिन्यू रहेगी. Right. So overall, expect gold and silver to correct further in the near term. However, long-term fundamentals remain intact. Simultaneously, Kunal, in terms of base metals, what's your view? बेस मेटल स्टिल सेल एंड राइज. मैंने आपको डे बिफोर यस्टरडे कहा था मेटल्स में बेचना चाहिए. कॉपर ऑलरेडी 637 आ गया है. मुझे लग रहा है 630 कॉपर, 270 जिंक, ये सब लेवल हम ये हफ्ते में देखेंगे. कॉपर 640 के आसपास, लेड 277 के आसपास बेच सकते हैं. लेड टारगेट 73 to 72. कॉपर की बात करेंगे तो टारगेट 600 रुपया और 628, और स्टॉप लॉस रहेगा 655 का.
645 का. Right. And in terms of crude oil or natural gas? क्रूड ऑयल नेचुरल गैस में भी मंदी का दौर जारी रहेगा, क्योंकि अगर यूएस में मंदी आती है तो क्रूड और गैस के भाव बढ़ नहीं पाएंगे ज्यादा. सो 6800 पे क्रूड बेचिए, 6700 का टारगेट रखिए, 6860 का स्टॉप लॉस रखिए. नेचुरल गैस 653 में बेचिए, 666 का स्टॉप लॉस रखिए, और नीचे में 625 का टारगेट. Right. In fact, काफी questions आ रहे हैं कुणाल. Let's quickly see what we've not answered and we can take that. Short term, you've already given a call in terms of natural gas. Gold, we've already responded to Rajendra Kumar ji as well. Uske alawa, Kunal, Mohit Jindal has a buy in terms of gold at 51,200. What should he do? मोहित जी, गोल्ड आपका बाई है 51,200 में, ऑलरेडी ये 49,000 आ गया है. सो आपने ऑलरेडी 2 रुपए की डाउन साइड देख ली है. सो मेरी राय में आप इसमें और थोड़ा बहुत गिरावट देखेंगे. 15 से $20 का करेक्शन और आ सकता है. 400 से 500 रुपए का और गिरावट आ सकती है. वहां पे हम रिव्यू करेंगे वेदर नया ऐड करने के नहीं. बट फिलहाल आप होल्ड कीजिए. अगर 500-800 रुपए जाता है और आपको फर्क नहीं पड़ता है तो आप होल्ड कीजिए. Right. Uske alawa, the other questions which are coming in, Kunal, Rishabh has bought silver at 62,000. When do you expect it to come lower, and what's the view from a 1 to 2 month perspective? It can go down to 54,500 to 55,000. And on the 62,000, it will come in year 2023, not this year. Right. And overall, any short covering in bullion? Do we have a strategy in terms of intraday today? Can we expect No. short covering? No, it's Friday. That's the only hope for gold and silver. Gold and silver prices have declined in last 2 to 3 days. So during the late evening session, we may see some short covering. So around 48,000, 920, 30 gold, 55,000, 250 to 300 gold. These are the levels where we can see some bit of short covering today, but the trend is definitely not bullish. Right. So that's the overall view coming in terms of commodities market. Thank you, participants. Thank you, Kunal, for joining. Subscribe to our YouTube channel for in-depth interviews of India Inc. and press the bell icon so that you do not miss our updates.